Okay, so the screen is visible now. Yes, sir. Okay, so let us today start the segment of GNSS observables and models. Uh, in the previous class, we have seen the variations of GPS positioning in the terms of static, kinematic, and we have seen the differential as well as relative positioning. Just to quickly remind you that static positioning is one of the very popular technique of GPS data positioning, where you stay at one place at one point for, let's say, 2, 3, 4 hours or for a complete day also, and you collect the data. But the kinematic is the need of the time. So kinematic data is at present it is more popular than the static data. And apart from that, people have also chosen to use the pair of the GPS station, so that one is base and other is rover. So when they are working in the code pseudo ranges, be it from CA code or P code, when they are using the code pseudo ranges and they try to difference the code pseudo ranges collected at base and at rover for the same pair of the satellite, this process is known as differential GPS. But when the carrier phase observation at both the station base and rover are differenced, it is called as carrier phase, relative positioning. So the terminology is little different in the sense that what type of observation you are using, that requires the terminology. So I hope there is no doubt in that particular understanding. Okay, so everybody is more or less comfortable with the content. If there is any question from the previous class, you can ask right now. Okay, no issues. So today we will discuss about the observables and some mathematical models that are being used in behind back of the screen, the GPS. So one is introduction. We'll go ahead with the introduction content. So a little initial introduction is a kind of thing which you should already aware of, that it is electromagnetic wave which is characterized by frequency, wavelength, angular velocity, wave number, and wave equation. So this is the propagation of EM wave. I'm skipping that, you can read on your own. There is no issues that. This is the right-handed circularly polarized pattern, which is the characteristic of the GPS carrier wave. So this you can do. The EM wave properties, it is again omega yt is equal to a sine omega t. Omega is 2 pi f plus phi if you are looking at this different phase term. These are the properties of the phase representation. D phi by dt becomes the frequency. The change of phase is the frequency, obviously. So in principle, you have GPS observable. You have 11 such type of observation type. Just like in your previous GDP course, we were discussing about every time that what are our observation, what are our observable. In fact, why observable? Because that observation that contains the error or observation that itself are variable in nature, that is called as observable. Okay, so L1 L2, which is the phase measurement on L1 and L2. C1, which is pseudo range using CA code on L1. P1 P2, which is pseudo range using P code on L1 and L2. D1 D2 is Doppler frequency on L1 and L2. T1 T2, transit integrated Doppler on 150 megahertz at T1 and 400 megahertz at T2. S1 S2 is raw signal strength or SNR values as given by the receiver for the L1 and L2 phase observation. Okay. So having said that, again we will focus on the
raw measurement. Please remember that you just go through the books on again on the carrier phase measurement as well as the code pseudo range measurement. And if you have any doubt, you are most welcome. You can ask anytime. There is no problem in that. Please remember the phase measurement on L1 L2 means that when the signal is reaching the antenna, it records the incoming phase, and again itself it generates the replica of the carrier wave inside it, and it tried to measure the difference between these two. Okay, so the pseudo range, again, as I've told you, the moment signal received at the antenna try to generate a replica of the code and try to correlate it to find a the time of travel estimation. Okay, so the L1, L2, C1 and P1, P2, these five, the top five are the key observable that are popularly used whenever you try to work on any kind of GPS data set. So generally available GPS observables are pseudo ranges, precise protected P1 and P2 codes, currently Y code under AS policy, anti-spoofing policy, which is available only to military user. We are not military users, so we cannot access the P1, P2 codes. However, we can access the clear acquisition or course acquisition CA code, which is available to civilian users. Okay. And the carrier phases, which is L1, L2 phases, used mainly in geodesy and surveying. Okay, when I say mainly used in geodesy and surveying, that means where we need the precise observation. Okay, range rate, which is Doppler, which is also available to us. Again, repeating the same for all of you once again, we have properly generally available. So the top five is the pseudo ranges on P1, P2, which we do not access. We only access the pseudo range on CA code as well as the carrier phase observation. So this carrier phase observation is available to all. But again, as I've telling you, at the same time, we also have to the so-called work for it to get the precise solution from it. So we will see later on how these codes pseudo ranges are being used. So code pseudo ranges means geometric range between satellite and receiver, which is distorted by the lack of synchronization between receiver and satellite clock and the propagation media. So that's why it is geometric range, but distorted by lack of synchronization between satellite and receiver clock. Recovered from measured time difference between instant of transmission and epoch of the reception. That means it is recovered from measured time difference between instant of transmission just and epoch of the reception. So L1 CA code noise level reaches even a meter or more. PY code pseudo ranges can be good as 20 centimeter or less. So we are less focused towards PY code pseudo ranges. Instead, we are more focused towards CA code ranges. Okay. Carrier phases. The carrier phases, which is nothing but the carrier phase difference between phases of a carrier signal received from satellite and a reference signal generated by receiver internal oscillator. So you just need to understand that carrier signal which is received from satellite and a reference signal generated by receiver's internal oscillators, we just have to work with this phase difference. It includes unknown integer ambiguity n, that is number of phase cycle at the starting epoch that remains constant as long as the tracking is continuous without loss of log. Phase cycle slip or loss of log introduces a new ambiguity. I hope it is very clear. I mean, is there any doubt in these two lines? Just focus on these two lines. If you have any doubt, you can ask right now. Everyone, is there any doubt?
आलोक, No, sir. प्रवीण, आज बच्चे बड़े कम आए हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? सुमित का तो चलो मैसेज आया था। यशोवर्धन, अरुण कुमार, ये सब कहाँ है भाई? क्या हुआ, कोई आज एग्जाम है क्या? भगत, यस सर। समझ में आ रहा है? सर एक्चुअली नो सर। हैं? नहीं सर। नहीं आ रहा है? ये सर कैरियर पे जैसा समझ में आ गया क्या है, हाँ। पर क्या समझ में नहीं आया? देखिए, आप बताइए, सर तभी तो मैं दोबारा explain- बस हाँ, इमेजिन नहीं कर पा रहे कि इसको कैसे लिंक करें मतलब। इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। हम्म, मतलब क्या इमेजिन नहीं कर पा रहे? मैं दैट आई कुडंट गेट। बताइए, क्या क्या इमेजिन नहीं कर पा रहे? हम्म, हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर यस सर। हम्म। सर एक और बता दीजिए क्या बताएं? बताइए, हम उसको दोबारा बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत हो सर। ना। टर्मिनोलॉजी हाउ मतलब कौन सी टर्मिनोलॉजी, मुझे वो बताइए। लाइक लॉस ऑफ लॉ, लॉस ऑफ लॉ तो भाई, लॉस ऑफ लॉग का मतलब क्या हुआ? देखिए, ऐसे सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझिए, फिर कंटेंट तो आप बाकी आप पढ़ ही रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात ये है, आपके पास एक रिसीवर होता है, ठीक है? यू ऑल हैव अ रिसीवर। अब आपने रिसीवर को फील्ड में जाके ऑन किया। अब जब रिसीवर ऑन होगा तो क्या होगा? उसका एंटीना इज नाउ इन रनिंग कंडीशन टू रिसीव द सिग्नल, ठीक है? Now that signal which is coming from the satellite end will be received on its antenna. That's it. That is one basic step. Now when that signal is at the doorstep of the antenna, receiver has to do something. It is not it should not be, at the blank end. It should do something. So at the first step, generally the CA code of the incoming signal, because signal is coming from, let's say, 7 to 8 satellite at the simultaneously. Now you have GPS, GLONASS, Galileo, let's say all kind of satellite. For the time being, let's GPS satellites are there. So 7 8 signal are coming at the doorstep of the antenna. Okay, just in simple languages, understand this concept, that you have an antenna, at the doorstep of it 7 or 8 signal are reaching. Now signal, the receiver has to do something to that signals. So with the reading of that signal, it initially knows with the help of this the identification number which is available in the navigation message, that which CA code it needs to open. That it opens the CA code, okay, and it tries to correlate with the internal replica of the same signal. Clear? So in the meantime, it does so in backend processing, that this correlation for identification of the time of travel. At the same time, it also read the handover word, that to which particular segment of the P code has to be opened. You know that the P code is a week long code.
It is, if let's say you have opened the receiver or switched on the receiver on Wednesday, the Wednesday segment has to be opened for finding another correlation for P code pseudo ranges. But for the time being, forget about the P code, just focus on the CA code only, that you have CA code, and CA code has to be um, uh, correlated for time of travel estimation. At the same time, receiver also demodulate all the information that is available on the signal. So from satellite end, the signal is modulated with this codes as well as the navigation message. So at the back end, satellite receiver is also demodulating all these information, and it is trying to generate the original carrier signal, which is low in energy. That means energy signal which is traveling from satellite end to receiver end is very weak signal that is received, a very distorted signal. So receiver internal mechanism try to amplify the signal, try to demodulate the information modulated over it, and try to reconstruct the carrier, original carrier. For what purpose? To find out the carrier phase difference with internal oscillators. Just like it is line written in here, the difference between phase of incoming carrier signal received from satellite and a reference signal generated by receiver's internal oscillator. See, receiver can only get a phase difference from 0 to 180, or for more precise you can get 0 to 360. That's it. Apart from that, nothing can be informed about the phase difference. So let's say on the receiver plate it is reaching at 45 degrees, so it will say that phase difference is 45 degree. If it is reaching at 60, phase difference is 60 degree. That's it. This delta phi only is informed in these 0 to 180 degree kind of thing. Okay, now when you write the equation which you have written in the previous class, the equation is simple, that phi at ti is equal to m lambda plus delta phi into lambda. That means the number of full cycle till the time it is locked with a particular signal, it has measured the full number of cycle plus the phase difference. There is another plus which is n lambda, which is missing. That's why the second point says ambiguity is unknown. So these are all parallel steps that receiver is taking. Okay, at the same time receiver also opens up the navigation file, just like a small pocket book. It opens up the various pages and try to get the exact information for calculating the satellite coordinate at the time, or at t is equal to t, where it wants the receiver position. और मैंने आपको बताया होता कि नेविगेशन फाइल में काफी स्टैंपिंग करके चीजें लिखी गई होती हैं, ताकि आप आज अगर t इज इक्वल टू t1 पे काम कर रहे हैं एंड t इज इक्वल टू te पे एफएमआरएस फाइल लिखी गई है, t इज इक्वल टू toc पे क्लॉक फाइल लिखी गई है, t इज इक्वल टू tot पे टाइम ऑफ ट्रांसमिशन हुआ है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आप यूज करके जो भी चेंजेस हुए हैं उस दौरान, रेट ऑफ चेंज के जो पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, इंक्लिनेशन, ऑर्बिट इंक्लिनेशन में, ऑर्बिट के रेडियस में, ऑर्बिट के आर्गुमेंट पेरिजी में, this all kind of changes you can account for, so that you get precise location of satellite in that orbit at t is equal to t, where you want your coordinate. Okay, so these all parallel steps are following, but carrier phase measurement are ambiguous in nature. That means until you resolve this ambiguity, you cannot get the precise solution. For code pseudo ranges, you immediately get the solution, but it is less precise. So code pseudo ranges will give you instant solution. Within few seconds on your screen, you will get latitude, longitude, and height. But for carrier phases, you have to wait for certain few seconds till the time of initialization, that is called as initialization period. In that time, satellite receiver is trying to identify this ambiguity, so that the carrier phase measurements are also in the same pipeline. So although your receiver is very small, but it is trying to do several tasks in the backlog. Okay, अभी कुछ हल्का सा आइडिया लगा? देखिए आप बिल्कुल घबराइए नहीं, इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दैट यू हैव टू जस्ट आस्क. जैसे अभी भगत ने बोला नहीं भाई सर इमेजिन नहीं कर पा रहे, दैट्स वेरी ट्रू,
But this is your first time you are reading a subject, and it is not a very easy subject in terms of picking up. आपको थोड़ा सा समय लगेगा, because these are initial few lectures only. हम लोग ने अभी शुरुआती कितनी की है. आपके जो क्वेरीज हैं वो बहुत जेन्युइन है, बट उनको समझने के लिए आपको एक एफर्ट अपना करना पड़ेगा. भगत, अब आप बताइए, अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा समझ में आया, कुछ इमेजिन आप कर पाए? बढ़िया. यस सर. हम्म. सर सर हाँ बताइए. फेज डिफरेंस में तो प्रॉब्लम क्या आता सर? क्या चीज? फेज डिफरेंस होने से प्रॉब्लम क्या आता है, उसको थोड़ा बता दीजिए. फेज फेज डिफरेंस होने से प्रॉब्लम क्या आता है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कम? फेज डिफरेंस होने से प्रॉब्लम क्या था, मैं समझा नहीं. आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन. सर व्हाई वी फाइंडिंग द फेज डिफरेंस? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. फेज डिफरेंस हम क्यों कर रहे हैं? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पाथ का डिफरेंस इज क्लोजली रिलेटेड विद द फेज डिफरेंस. मतलब अगर आप वेव के पाथ के बारे में जानना चाहते हैं, उसने कितना पाथ ट्रेवल किया है, तो अगर आप उसके फेज की इंफॉर्मेशन रखते हैं तो उसके पाथ के बारे में आप बता सकते हैं. ये आपने बेसिक 11th लेवल फिजिक्स का यूज करना है यहाँ पर. तो फेज डिफरेंस का यूज करके हम क्या कर रहे हैं? While knowing this delta phi, we are in fact trying to identify about the path of the satellite signal travel. तो केवल ये ध्यान रखिए, आपके सेट, जैसे आपने इस समय लॉक हो गया सिग्नल आपके सेटेलाइट के साथ, आपने रिसीवर ऑन किया और इसने एक सेटेलाइट को पकड़ लिया, उसके सिग्नल को ट्रेवल कर रहा है. तो जिस समय उसने लॉक किया है सिग्नल, उस समय से लेकर के जब तक सेटेलाइट का सिग्नल उसके रिसीवर के पास पहुंच नहीं जाता है, तब तक वो नंबर ऑफ साइकिल्स काउंट कर लेता है. उसको पता होता है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे. अच्छा आप ही बताइए, अगर आपको पता है कि एक वेव मेरी 19 सेंटीमीटर की है, जस्ट थिंक इन दैट. आपकी वेव एक 19 सेंटीमीटर की है, एक वेव आपकी 24.4 सेंटीमीटर की है, ठीक है. अभी अगर सैटेलाइट जहां से सिग्नल चल रहा है वहीं से लॉक्ड है आपके पास, तो क्या होगा? आपका सैटेलाइट का सिग्नल से यहां तक का डिस्टेंस है 20,000 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई 24.4 सेंटीमीटर फॉर L2 और 19 सेंटीमीटर फॉर L1. इस दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या होगा? नंबर ऑफ साइकिल्स मिल जाएंगे आपको कि नहीं मिल जाएंगे? भगत बताइए. यस सर. अब आपको पता चल गया है कि टोटल n नंबर ऑफ साइकिल हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आप जैसे ही स्विच ऑन करें तो सैटेलाइट के एंड से ही लॉक हो पाए आपका सिग्नल. तो वो क्या होगा? सैटेलाइट के सिग्नल तो कॉन्टिन्यूअस ट्रेवल कर रहे हैं, आपको तो नहीं पता है आप कहाँ लॉक हो रहे हैं, लेकिन जहां से लॉक हो रहे हैं वहां से लेकर के जब तक वो सिग्नल रीच नहीं हो रहा है रिसीवर के पास, दैट विल बी कंसीडर्ड एज लॉक्ड पीरियड. उस दौरान एवरी साइकिल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. लेकिन उसके पहले क्या? उसके पहले आपको नहीं पता, दैट इज कॉल्ड एज एन एम्बिग्यूटी. अब आपने बीच में फिर से स्विच रिसीवर ऑफ कर दिया, फिर से ऑन किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं साइकिल लॉक और साइकिल स्लिप और लॉस ऑफ लॉक. वैली शेट्टी, आपको समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड सर. ओके. See, by explaining, it looks like that receiver has to do a lot of job, but is it a time-taking process? Answer is no. It is very quick. Within a fraction of second, it is doing every multiple task that is required. That's why it is popular in use. If it is so time-taking that it will take 2-3 days just to decode that information, why would somebody use GPS? So the requirement is more. It is enough that it has to do several steps, but at the same time the process is quick. We just are explaining to you because you are newcomer to this field. If you use the receiver, you won't realize these differences. The moment you switch on the receiver, the moment you see the satellites are visible, you will get the data, you get the immediate, they get the solution.
because their microprocessor are so well programmed that you will get quick solution within few seconds. Any more question? Okay, so the आलोक स्क्रीन में क्या अवेलेबल है? फॉर्मेट्स ऑफ जीपीएस डेटा आ रहा है लिख करके? Yes, sir. Format of GPS. हाँ, सो अब देखिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग अब आप लोग हो सकता है कि आप में से बहुत लोग सिर्फ डेटा फाइल को ही यूज करें, यू डू नॉट एक्सेस द यू नो द अदर फाइल्स और अदर मैकेनिज्म। तो अभी हमारे पास डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है, तो डेटा किस फॉर्मेट में आता है वो समझने की बात। प्लीज अंडरस्टैंड दैट एवरी मैन्युफैक्चरर delivers the data in its own proprietary format. Okay, if you uh, use some brand company's receiver, they will give you the data in their own format or proprietary format, but at the same time the geodetic receiver output the receiver binary data to an exchange ASCII format data called RINEX, which is receiver independent exchange format file. This receiver independent exchange format file is created by University of Bern, Switzerland, just because they do not want any kind of monopoly of the receiver manufacturer. आपने रिसीवर का डेटा आया है तो आपके फॉर्मेट में ना होकर के वो एक साइंटिफिक फॉर्मेट में जाए, इसको बोलते हैं राइनेक्स फाइल। इट इज वेरी पॉपुलर, रिसीवर इंडिपेंडेंट एक्सचेंज फॉर्मेट। आपका मैन्युफैक्चरर का जो प्रोप्राइटरी फॉर्मेट है उससे कन्वर्जन करके राइनेक्स फाइल बनाई जाती है। अभी जैसे आप लोग नॉर्मल सैटेलाइट के इमेज की फाइल का जियोटिफ देखते हैं ना, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीईजी, डॉट ये, इसी तरह ये राइनेक्स फाइल होती हैं, इनका एक अपना एक फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट में डेटा अरेंज होता है एंड दीज फाइल्स आर बीइंग यूज्ड एज जीपीएस डेटा फाइल्स। तो अगर इफ समबडी आस्क कि जीपीएस डेटा फाइल्स किस फॉर्मेट में होती हैं, you will say receiver independent exchange format, or in short it is RINEX files. So RINEX file has a particular name. At the first four SSSS is nothing but the 4-character station name. DDD is the day of the year. अभी आपको मैंने बताया हुआ है कि जीपीएस को जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं पता है, उसको पता है 001 और 365।
That means day 1 of the year, day 365th of the year. F is the file sequence number within day. 0 for current day, whole day, or ABC is means hourly sessions. Okay. YY is the year. T is the file type. O means observation file where you will have information about L1, L2, P1, P2, C1. N means navigation file, which is where you have ephemeris data, clock information, perturbation parameters, etc. M file, which is meteorological data file, which says about the medium information. G means GLONASS navigation file. H means geostationary GPS payload navigation file. So all kind of formats are available. But for time being, let's say, just note down, I just ask you, suppose your station MNIT is there and I want the data for 12th February. तो जरा मुझे 12 फरवरी के फुल डे की राइनेक्स फाइल ऑब्जर्वेशन फाइल बताइए, उसका फाइल नेम टर्मिनोलॉजी में क्या लिख के आ रहा होगा, आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, जरा सोच के बताइए. टेक योर टाइम, 5 minutes. चलिए बताइए आलोक, क्या फाइल का नेम होगा? सर MNIT 43.21O. नहीं, आपने 0 भूल गए. F. So MNIT, it is only 4 characters, so 5 character will not come. MNNIT की जगह आप simply MNIT करिए, ठीक है? MNIT, then 0430 and 21O. चलिए, अब मुझे प्रवीण बताइए 17 फरवरी आज के डेटा सेट की फाइल का नाम बताइए. सर 17 फरवरी. फिर से पढ़िए, क्या बोल रहे हैं? हेलो, 17 फरवरी. 17 फरवरी का सर. हाँ हाँ, इसका डेटा फाइल सर रुचि आप बताइए. सर नहीं पता. अरे आपको सामने फाइल फॉर्मेट लिखा है, आप नहीं बता पाएंगे क्या उसको देख के?
सर MNIT हम्म 0 हम्म 4 3 0 17 फरवरी को कौन सा दिन हुआ जीपीएस के हिसाब से? कौन सा डे ऑफ द ईयर है? शिवम बताइए। सर MNIT 0480220। क्या क्या फिर से बताइए। सर MNIT 048 हाँ हाँ हाँ। 22। ये टू टू क्यों आ गया? डॉट टू टू आएगा ना, डॉट टू टू ओ, सीधे टू टू ओ कैसे आ जाएगा? क्यों? क्योंकि सर फॉर्मेट सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया सर तो। हम्म चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। अब मुझे ये देख के बताइए, ये जो डेटा है ये कौन से दिन का है, जरा बताइए। भगत बताएंगे, भगत। चलिए बताइए कौन से ईयर का और कौन से ईयर में कौन से दिन का डेटा है? 2002 हाँ ओके गुड। and days सर, फाइल टाइप बताना सर। उस 012 क्या रिप्रेजेंट करेगा बताइए? क्या रिप्रेजेंट करेगा बताइए?
दिसंबर ये सब तो आपको बहुत क्विकली दिख जाना चाहिए भाई। इसमें कुछ ऐसा तो रॉकेट साइंस ऐसा तो है नहीं। क्यों भाई अरुण, बताइए कौन सा दिन है ये? वैली शेट्टी, आप बताइए कौन सा दिन है ये? 12th Which day? January, sir. It is 12th January 2002. Yes, sir. Yes. क्यों भाई भगत, इसमें क्या दिक्कत हो रही थी बताइए? सर, how is denoting January 0? How we denoting January? I was denoting क्या? बस थोड़ा क्लियर बोलिए, समझ नहीं आया। Sir, how we are denoting January? Because it is the day 012 means the 12th day of the year. 12th day of the year क्या होता है बताइए? January. तो फिर किसी को कोई डाउट? क्योंकि फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर गिवन ए फाइल, you will be in laboratory, you will be reading these files, Rhinex file, navigation file, to answer several questions while reading through MATLAB codes. सर एक बार फाइल बता दीजिए सर। हैं? repeat कर दीजिए question। हेलो हेलो, हाँ कुछ बोले, बोलिए, कौन पूछ रहा है? सर प्लीज एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। और बीच में किसने कुछ पूछा था? फाइल दिखा दीजिए सर फाइल टाइप सर। फाइल टाइप एक बार और बता दें। ये देख लीजिए, the first four character station name represents the name designator, MNIT, IITK, IITB, etc. Triple D, that means day of the year of first record, that means the day of the year from 001 to 365. F means file sequence number within day, that means 0 for whole data file, complete day की फाइल होगी तो 0 होगा। ए बी सी और एक्स लिखा होगा तो आर्ली सेशन डेटा फाइल होगा। अच्छा पूछिए एक्स क्यों? 24 hours per day. Yes, it is for only 24 hour. Why is it represent 25th and 26th? So ऐसा तो कुछ होता नहीं। Early session means A, B, C to X. Y represent year. File type means observation file। क्यों? आपको मैंने ऊपर भी बताया, ये देखिए, सॉरी, ये ऑब्जर्वेशन फाइल में आपके क्या होता है? L1, L2, C1, C2, P1, P2। आपके ये इंफॉर्मेशन जब होगी तो वो ऑब्जर्वेशन फाइल में जाएगी। आपके पास ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, यहां पर आप क्लिक करके फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे और इसी असाइनमेंट नंबर आपका 2 होगा, जिसपे आप हम लोग को ये बताएंगे कि ये इसके बारे में एक शॉर्ट नोट आप प्रिपेयर करेंगे 5 to 10 पेजेस का, जो आप ये बताते हुए कि इन सब सोर्सेस से राइनेक्स के ऊपर आप इंडिपेंडेंट पढ़िए और बताइए कि राइनेक्स फाइल में किस तरीके से डेटा स्टोर होता है, क्या रिप्रेजेंट होता है। यू हैव टू रीड इट फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज एज पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 1 शायद मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं, अगर नहीं दिया है तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। इट इज रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम समरी। ओके, ये देखिए आपकी राइनेक्स फाइल ऐसी होती है। अब आप इसको एक बार क्विकली जरा रिकलेक्ट करके देखिए कि क्या क्या आप बता पा रहे हैं, क्या क्या आप देख पा रहे हैं।
देखिए राइनेक्स फाइल में देखिए आपके सामने है ना, इसमें देखिए क्या है, ये लिखा है वर्जन, ये राइनेक्स फाइल किस वर्जन की है, इसके ऊपर लिखा है ऑब्जर्वेशन डेटा, यानी कि ये डॉट ओ फाइल है, ये जी फॉर जीपीएस मींस ये केवल जीपीएस डेटा बता रही है, तो इसमें देखिए राइनेक्स वर्जन स्लैश टाइप, तो ये ऑब्जर्वेशन डेटा टाइप है, राइनेक्स का वर्जन 2 है, 2.0 कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम रन बाय डेट, तो डेट के देख लीजिए 10 जनवरी 1907, 10:19। ऑस्लिक, ऑस्लिक करके कोई एजेंसी होगी जो ये राइनेक्स ये जीपीएस डेटा स्टेशन चलवा रही होगी, और ये कहाँ का डेटा है, ये है ऑस्ट्रेलियन रीजनल जीपीएस नेटवर्क है एआरजीएन, तो ये एआरजीएन के और ये कहां पर लोकेटेड है, कोकोस आइलैंड, वहां के लिए कमेंट भी लिखा हुआ है, ओके। बिट 2 ऑफ एलएल लॉस ऑफ लॉक इंडिकेटर, एलएलआई का मतलब होता है लॉस ऑफ लॉक इंडिकेटर इज पॉजिटिव 4 फ्लैग्स डेटा कलेक्टेड अंडर एएस कंडीशन, मतलब यहां पर एंटी स्पूफिंग ऑन है। फिर ये क्लॉक ऑफसेट के बारे में जानकारी दी गई है और हार्डवेयर कैलिब्रेशन के बारे में बताया गया, हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बट मार्कर नेम इज देखिए आप कोको, मार्कर नंबर AU18, इस तरीके से इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। इसी की तरह ये हेडर बोला जाता है, जहां पर ये सब बताया जाता है इसको हेडर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे होते हैं मेजरमेंट्स। अब मेजरमेंट्स कैसे होते हैं, देखिए आप यहां देख पा रहे हैं 5 C1 L1 L2 P2 P1 दैट इज टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहां देखिए क्या लिखा है, ये सारे मेजरमेंट्स लिखे हैं, तो आप देखिए आपको अच्छा याद आ रहा होगा, तो पहले C1 का फाइल है, तो C1 की फाइल देखिए लिखी हुई है, ये C1 की फाइल है C1 L1 L2 P2, समझ पा रहे हैं। तो अगर लेट से ये C1 की फाइल है, तो ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 20,0084217, यानी कि ये सब मीटर में है, तो 20,08427 या 20,842 किलोमीटर, तो दैट रिप्रेजेंट द रेंज, दैट दीज आर वैल्यूज आर द रेंजेस। तो यहाँ देखिए 22, यानी कि आप इसमें एरर कैसे हो सकती है, 2-2 लाख की भी एरर है, ये देखिए ये 20 है, ये 20 है, या 24 आ गया, ये 22 आ गया, ये 22 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले समय में एरर कम है और इसके वाले ऊपर वाले में समय में एरर ज्यादा थी, समझ रहे हैं। ये पहली सेटेलाइट का डेटा है, ये 25th का सेटेलाइट का डेटा है, ये 9th सेटेलाइट का डेटा है, ये 23rd सेटेलाइट का डेटा है, ये 17 का डेटा है, ये 6 का डेटा है। तो अभी ऐसे आपको समझना है कि दीज आर दी राइनेक्स फाइल, हाउ दे आर अरेंज्ड। आपको आपको एक फाइल ओपन करके भी दे दी जाएगी पढ़ने के लिए। इसके बाद ये देखिए टाइम ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्व, ये भी वही है, ऊपरी वाला फाइल है, इसको चेंज नहीं किया, बस ऊपर हेडर और नीचे मेजरमेंट बताया गया था। अब इसमें एक एक करके ऊपर वाले में बता रहे हैं कि ये रिसीवर के वर्जन को बताता है, अप्रोक्सीमेट पोजीशन XYZ की बताता है, टाइम ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को बताता है, टाइम ऑफ लास्ट ऑब्जर्वेशन को बताता है। इस देखिए क्या लिखा है 9th जनवरी 1907 में 0730 यानी कि मॉर्निंग 7:30 से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ है। It goes in available for how many satellite? 1, 2, 25, 9, 5, 23, 17 and 6. ये सैटेलाइट नंबर्स हैं। वही चीज आगे एक्सप्लेन की गई है। ये है मेजरमेंट टाइम, रिसीवर टाइम, रिसीव टाइम टैक्स, ये 0 है, इपोक फ्लैग 0 मींस ओके, एवरीथिंग इज ओके। नंबर ऑफ ट्रैक सैटेलाइट 7, नंबर ऑफ सैटेलाइट 1 रिसीवर पर रो। देख लीजिए इसको एक बार। सर ये इपॉक फ्लैग क्या है? कहां पर? ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है इपॉक फ्लैग।
0 equal to okay. ये नहीं सर, ये हाँ ब्लू कलर का ये हाँ 7 7 नहीं सर, 0 0 हाँ इपॉक फ्लैग। हाँ, epoch flag एक्चुअली ये बताता है कि इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द डेटा सेट और नॉट। तो epoch फ्लैग का मतलब होता है 0 आ गया तो इसका मतलब ओके है, इट इज गो अहेड फ्रॉम द डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ और वैल्यू आएगी तो उसके नॉमेनक्लेचर में 1 to 4 तक वैल्यूज होती हैं उसमें। थैंक यू। Sir, in Rhinex file format, while specifying at YY year format, how will we get to know which century we are referring to? YY At YY, we are taking last 2 digits of a year, no, sir. हाँ, How will only in 20th century we'll get to know the recent years, and how will we get to know which century we are referring to? This is 1997, like that. हाँ तो अभी 2097 नहीं आया है ना। No, sir. Previous one, 18th century or like that. How will you know about previous things, not about 20th century? अभी तो बताइए ना, आप ही बताइए जीपीएस कब से चालू हुआ है। 19th century. 1994 से चालू हुआ जीपीएस, ठीक है। Okay. तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. Now here you see that bit 2 of LLI plus 4 flags data collected under AS condition. So synthetic P2, which is anti-spoofing, is on. C1, L1, L2, P2. It means synthetic P2, which is anti-spoofing, is on. It is not the actual P2. Okay. Similarly to navigation data, you see this is a navigation data file. Just understand a little bit.
तो आप देखिए इस राइनेक्स की नेविगेशन फाइल में m नॉट eccentricity square root of a TOE right ascension of ascending node I naught argument of perigee total group delay everything is written but in terms of numerical values. These values make this navigation file little slow in terms of modulation rate because there a lot of information has to be communicated. Okay. So it is also Rhinex version 2 navigation data GPS Xprint version 1.1 gauge running of 17th August 2009 31 37 gauge broadcast ephemeris file. Gauge is a station name. Gauge 4 character. That ION alpha, ION beta, delta UTC, A naught A1 T. ये आप देख रहे हैं A naught A1 T omega और TW. This is for the correction of the so-called clock data. Clock correction के लिए हम लोग A naught A1 use करते हैं ना. So this delta UTC is about correction term given for the drift parameter of the clock data. फिर यहाँ आप देख सकते हैं m नॉट मीन एनोमलीज इसेंट्रिसिटी, ये ब्लू से इसेंट्रिसिटी लिखी हुई है स्क्वायर रूट ए से, ये लिखा हुआ है आपका मेजर एक्सिस का स्क्वायर रूट, फिर टी ई से लिखा हुआ है आपका टाइम ऑफ एफेमेरिस, फिर राइट असेंशन ऑफ असेंडिंग नोड, फिर ये लिखा हुआ आई नॉट लिखा हुआ है आपका इंक्लिनेशन एंगल, और फिर ये रेड से ओमेगा से लिखा हुआ है आपका आर्गुमेंट ऑफ पेरिजी, फिर ये टीजीडी से लिखा हुआ है टोटल ग्रुप डिले. इन्हीं पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करके देखिए यहां लिखा गया है, इसको एक बार देखिए.
So the year, month, day, hour, minute, second, आप देख पा रहे होंगे ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है. 26 PRN means 26 number of satellite. 26 July 1992, 8:44 AM. Time of clock or TOC or T0 is available. A0, A1 and A2, which is the drift bias, drift and drift rate is available. Drift rate is 0 for the time being. This is something minus 3.10 power minus 13, minus 10 power minus 6. Age of ephemeris, that is in second, TOE, that the sinusoidal error portion of the radius, delta n, change in anomaly, mean anomaly, cosine of the CUC, that means change in the so-called what represented the U in previous class, CUC, CUS. I think the change in the argument of the perigee or change in the right ascension. I think change in the argument of perigee. Anyone recalling that CRS, CRC is the change in the radius of the satellite orbit. CIC, CIS is the change in the inclination, cosine and sine term of the change in the inclination. What were the CUC and CUS? Let me just see. It should be something. Argument of the latitude. Argument of the latitude. Yes, yes. Then TOE, which is GPS weak, it is written. Then obviously the omega naught, CIS, all these parameters are you will be using when you will be computing the satellite coordinate at particular epoch, because you need the satellite coordinate at that epoch at which you also want to compute your position. You see here
You see here in this particular slide, there is a dt sat is written as dt sat is equal to a naught plus a1 t minus t naught plus a2 t minus t naught square. That means it is saying that if you have to compute the satellite clock error, which is considered that the offset of the GPS offset of the satellite clock with respect to GPS time is known to you, you can compute it, but you need to write the and solve this equation which computes the a naught plus a1 plus a2. This is a very important concept that you should understand, that you need to understand that GPS navigation file itself tells you that you need to have a naught, a1, a2 parameter. Any questions? So anyways, we stop it here because more content in the next slide is more on the application part. So tomorrow you will be given a little more introduction to reading the Rhinex file as well as the navigation file. And then it will be more comfortable for you to pick up the future few slides where you will be using the Rhinex file and navigation file to estimate your position. Okay, any questions?